तो दोस्तों फिर से आ गए हम चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 2, 10th क्लास। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पार्ट 2 में हम जानने वाले हैं चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स। स्टूडेंट्स, economies keep changing. Earlier agriculture was the major source of employment, and economic activity and development takes place. Industry grows, service grows, technology develops, urbanization increases, people needs change. Today services have become extremely important. Example: IT, banking, education, healthcare, transportation, communication and tourism. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों बहनों। नेक्स्ट, now here's an interesting point. Employment in different sectors. The number of people working in a sector and the amount of production of that sector may not always increases in the same proportion. Imagine a small farm. Suppose 5 people are working there. सपोज करिए कोई फर्म है उसमें 5 लोग काम करते हैं, बट एक्चुअली ओनली 3 पीपल आर रिक्वायर्ड, जबकि देखा जाए तो सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है। देयर 2 पीपल आर नॉट एडिंग मच एडिशनल आउटपुट। जो नए 2 लोग ऐड हुए हैं वो कुछ खास आउटपुट नहीं हो रहा है उनसे, यानी पहले भी 3 से भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, 5 से भी उतना ही हो रहा है, तो यानी कि 2 क्या है, अननेसेसरली है। सो द क्वेश्चन इज, आर दोज पीपल आर रियली फुली प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड? देखने में तो वो दोनों भी एम्प्लॉयड है, बट दिस टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए देखते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। Underemployment means a person is employed but his or her full potential or working capacity is not being properly utilized. For example, a person may be working only for a limited number of days or hours despite being willing to work more. सपोज करिए कोई भी पर्सन जो है काम करना चाहता है, उसे काम मिल भी जाता है, लेकिन काम जो है उसे उसका जो कंपनी को उतने वर्क उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ले रख लिया गया। अब कंपनी क्या ज्यादा प्रोडक्शन करेगी? नहीं ना, उतना ही करेगी। नहीं, तो इसलिए उसका कोई आउटपुट नहीं होगा। बट सो एम्प्लॉयमेंट है बट फुल यूटिलाइजेशन नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, जॉब तो है बट पोटेंशियल का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, देखते हैं नेक्स्ट पे भाइयों। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई कंसेप्ट और एग्जाम में बड़ा रिपीट करता है भाइयों। सपोज अ फर्म नीड्स ओनली 3 वर्कर्स बट 5 फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग। नाउ इमेजिन 2 पीपल लीव द फर्म। अब सपोज करिए कि दो बंदे आउट हो गए फर्म से बच्चों। विल प्रोडक्शन फॉल? क्या प्रोडक्शन गिरेगा? नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन तो 3 से ही हो रहा था। The production remains the same. Those 2 people are not actually necessary. उन 2 लोगों की कोई जरूरत नहीं थी। This is called disguise unemployment because unemployment is hidden. That called disguised. Okay, they look employed, but their removal does not reduce output. Creating more employment. Next, now the big question: how can India create more employment? We can improve इरिगेशन, रोड्स, स्टोरेज। ये पूछ सकता है आपसे 5 मार्क्स में बच्चों कि कैसे इंडिया अपने एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकता है। तो हम वी कैन इम्प्रूव इरिगेशन, जिससे कि किसानों को रोजगार मिले, उनको फसल अच्छी मिले। रोड अच्छा हो जिससे कि उनकी फसल जो है मार्केट या में अच्छे से पहुंच पाए। स्टोरेज अच्छा हो जिससे कि उनकी फसल सड़े गले नहीं। फूड प्रोसेसिंग हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, टूरिज्म हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्किल डेवलपमेंट भी हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ विलेज gets
a food processing unit. Farmer can sell crops locally and new jobs can be created. अगर गांव में ही रोजगार मिल जाए तो सही है ना. So development should create productive employment opportunity. तो डेवलपमेंट होगा तो न्यू अपॉर्चुनिटीज भी साथ ही साथ आएंगी. मनरेगा ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत रिपीट करते हैं. नाउ वी कम टू एन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, क्योंकि 2005 में ही आया था इसलिए 2005. महात्मा गांधी नेशनल रूरल, M for महात्मा, G for गांधी, N for national, R for rural, E for employment, G for guarantee, A for act 2005. Its basic idea is to provide a legal guarantee of wage employment to rural households. यानी कि गांव के लोगों को क्या है, रोजगार देना था. Willing to do unskilled manual work, जिनको कोई काम नहीं आता वो अनस्किल्ड है, subject to the act. It helps provide livelihood security. It can also create useful rural assets. So students, remember, Manrega, rural employment plus livelihood security. Okay. Organized sector. Now we change our classification. This time we are not asking nature, factory or services. Nature, factory or services. हाँ तो दोस्तों, organized sector. The organized sector is registered and generally follows formal rules and regulations. यानी कि इसमें क्या होता है, सबको काम जो है एक सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है. नाउ वी चेंज आवर क्लासिफिकेशन. दिस टाइम वी आर नॉट आस्किंग नेचर, फैक्ट्री और सर्विस. वी आर नाउ वी आर आस्किंग इज द वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. कोई भी वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज रजिस्टर्ड एंड जनरली फॉलोज फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस. Workers may have defined working conditions and benefits according to applicable rules. जो वर्कर वहां पर काम कर रहा है उसके रूल्स क्या है. Examples include many formal offices, registered factories and government institutions that called formal sector. But under unorganized sector क्या है फिर दोस्तों? Unorganized sector includes many small and scattered units. Workers may have less job. जैसे सपोज करिए कोई भी वर्कर है, उसका कोई जॉब आर फिक्स नहीं है, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी है, फीवर फॉर्मल बेनिफिट्स है, उसके कोई बेनिफिट्स नहीं है, लाइक योर काम वाली आंटी इन योर हाउस. फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स and casual workers may fall into this broad category. Organized does not mean good people and unorganized does not mean bad people. It is simply an economic classification based mainly on the nature of organization and formal rules. Okay? जिसमें क्या होता है, इसमें कोई फॉर्मल रूल्स नहीं होता है, कोई लीव आर फिक्स नहीं है, कोई इसमें क्या है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है. अब आते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. देखिए तीन टाइप से हम डिवाइड करते हैं. एक तो हम प्रोडक्शन बेसिस पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. फिर हम देखते हैं उसकी वर्किंग कंडीशन के बेस पर ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज्ड. फिर हम देखते हैं उसका ओनरशिप क्या है. तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाट इज कॉमन सेक्टर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. पहले लेते हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर. नाउ वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन, पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मींस द गवर्नमेंट ऑन्स और कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी. यानी जहां पर गवर्नमेंट सब कुछ करती है, गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, रेलवे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एंटरप्राइजेस. द पब्लिक सेक्टर ऑफन फोकसेस ऑन पब्लिक वेलफेयर एंड एसेंशियल सर्विसेज, नॉट ओनली प्रॉफिट. यानी पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट के लिए नहीं, पब्लिक को फैसिलिटी देने के लिए होता है दोस्तों. लेकिन प्राइवेट सेक्टर फिर किस लिए होता है,
चलिए देखते हैं। Private sector is owned and managed by private individuals or companies. Example, private schools, private hospitals, shops, private companies. Hmm? Here profit is generally an important motive. So remember, government, public sector, private individuals, companies, private sector, easy. Then quick comparison. Let's revise everything based on nature. Primary, natural resources. Secondary, manufacturing. Tertiary, services. Based on working conditions. Organized, formal rules. Unorganized, less formal security. Based on ownership. Public, government. Based on ownership. Public, government, private, individual companies. Very important. These mix these mix them in the exam. There are three ways of classifying economic activities. Why can employment rise without a proposal rise in output? Why is the tertiary sector important for agriculture and industry? How can rural areas create productive employment beyond farming? Hmm? Why does the government provide services that may not be highly profitable? Now let's see whether you have actually understood the chapter. Simply memorize definitions. Like question 1, why can employment increase without a proportional increase in production? Because additional workers may not contribute significantly to output, especially in cases of disguised unemployment. Okay. Second, why is tertiary sector important? Because services support both production and daily life. Only one line, one answer. Third, how can rural employment increase? थ्रू इरिगेशन. हम रूरल एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. अब हम देखते हैं बच्चों रिवीजन टर्म्स. एग्जाम रिवीजन की टर्म्स. Before the exam, these are the keywords you must remember: primary, secondary, tertiary, GDP, gross domestic product, that called final products. फाइनल प्रोडक्ट्स यानी कि जो सामान हमारा बनकर तैयार हो गया है मार्केट में बिकने के लिए, दैट कॉल्ड फाइनल प्रोडक्ट. इंटरमीडिएट गुड्स, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो नोन एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें सब कुछ क्या होता है, सिस्टमेटिक फिक्स होता है रूल्स के अकॉर्डिंग. अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है रूल्स के अकॉर्डिंग, कोई प्राइवेट ना तो जॉब आवर्स फिक्स हैं ना ही जॉब सिक्योरिटी है. पब्लिक सेक्टर ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर जो कि प्रॉफिट के लिए होता है, गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए होता है. मनरेगा, MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. If these keywords are clear, you can handle most questions from this chapter. Okay. Thank you. Okay students, that's all for sectors of the Indian economy. तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है. नेक्स्ट हम मिलते हैं. आपको और भी कुछ बातें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं. इकोनॉमी इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट फॉर द एग्जामिनेशन. व्हेन यू सी अ फार्मर थिंक प्राइमरी, व्हेन यू सी फैक्ट्री थिंक सेकेंडरी, व्हेन यू सी when you see a government organization think public sector, and when someone asks you about GDP, don't panic. Just remember, GDP is equal to value of final goods and services. Okay. So thank you students. Bye bye. Learn, understand, apply, score. Bye bye.